Hello guys, welcome to my channel Book Learner. Today we will study conjunctions of English. Now, conjunction is a word that join words, group of words or sentences. जैसे and, but, or, because, yet, until, unless, if, nor, so, though, although, when, for. Example, chess and ludo are my favorite games. Now then this two words are joining. We are joining the two words and these words are joined with the end. Chess and ludo are my favorite games. Now next, I need some colored paper and a bottle of glue. In this, there are group of words we are joining. Now I need, like group of words is some colored paper and a bottle of glue. We are joining these two. I need some colored paper and is the conjunction and a bottle of glue. Next, Manu made cake and Tanu decorated the room. In this sentence, there are two sentences. Manu made cake, Tanu decorated the room. Now if we join these two sentences, then we use and. Manu made cake and Tanu decorated the room. Now conjunction and means or. Join words and sentences. Now there are two sentences. She is pretty, she is young. In this, we are talking about the same girl. She is pretty, she is young. Then we join these sentences. She is pretty and young. Now we are joining two words in one sentence. She is pretty and young. Now next, she went to market. She bought some ribbons. Now there are also two sentences. We are talking about the same girl. She went to market and bought some ribbons. Now conjunctions or means yeah is used to show choice. Now we have two choices, then we use or. Like example, would you like coffee or tea? इन दिस आप कॉफ़ी या चाय में से क्या लेना पसंद करोगे? कोई मेहमान आता है तो वी आर आस्किंग लाइक दिस, कॉफ़ी आप क्या कॉफ़ी लोगे या चाय लोगे? आप दोनों तो उनको प्रेफर नहीं करते कि ना आप चाय भी पी लो कॉफ़ी भी पी लो. देन वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी? वी कैन नेक्स्ट वी कैन गो टू द बीच और स्टे एट होम. तो नाउ हम या तो बीच जा सकते हैं या फिर घर पे रह सकते हैं, रुक सकते हैं. तो वी आर यूजिंग और. Now conjunction but means लेकिन is used to join opposite ideas. Example, Anil is intelligent but careless. अनिल क्या है? वो intelligent है लेकिन careless है. Next, I really wanted that dress but it was too expensive. मुझे वो ड्रेस चाहिए, अच्छी लगी थी but मतलब लेकिन it was too expensive, वो बहुत expensive थी. Now conjunction yet means फिर भी is used to join two contrasting ideas together. Example, it is a warm day yet he is wearing a coat. मतलब today is the warm day, मतलब गर्म दिन है फिर भी वो कोट पहन रहा है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, she was unwell yet she went shopping with her cousin. उसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वो अपनी कजिन के साथ शॉपिंग गई. नाउ कंजंक्शन बिकॉज मीन्स क्योंकि इज यूज टू गिव अ रीजन. दैट एग्जाम्पल, शी इज एब्सेंट बिकॉज शी हैज़ ए फीवर. वो आज एब्सेंट है क्योंकि उसे फीवर है. आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस बिकॉज आई लाइक दिस. मैंने ये ड्रेस इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है. क्योंकि ये ड्रेस मुझे पसंद है इसलिए मैं पहन रही हूँ. सिंपल, क्योंकि. नाउ कंजंक्शन नॉर इज यूज टू जॉइन टू नेगेटिव अल्टरनेटिव. शी डिडंट स्पीक नॉर डिड शी मूव. ना उसने कुछ नहीं बोला ना ही वह हिली. मतलब ना ही, नॉर मीन्स ना ही, है ना. शी डिडंट स्पीक, ना तो उसने बोला और ना ही वो हिली. शी कांट प्ले गिटार नॉर कैन ही सिंग. वो गिटार नहीं बजा सकती ना ही गा सकती है. नॉर इज ना ही.
नाउ कंजंक्शन सो. सो मीन्स इसलिए, is used to show that second idea is the result of the first. Example, it was a lovely day so we went for a walk. आज का दिन बहुत अच्छा है, सुहावना है, इसलिए हम टहलने गए, वॉक पे गए. It was cold so I turned on the heater. ठंडा है इसलिए हमने हीटर को turned on. Conjunctions until refers to a condition that has to be met by certain time. Now until is used when time की बात हो रही हो, है ना. Example, I waited for him until he came back. मैंने उसका वेट किया जब तक वो वापस आया. She cannot leave until the work is done. वो नहीं जा सकती जब तक काम पूरा होगा. Now conjunction unless refers to a condition to be met in order to meet some second one. In this there is a particular condition. Now you can take example, you cannot enter the club unless you have ID. Say unless also the meaning is same, jab tak, but there is a condition. You cannot enter the club unless you have ID. आप क्लब में एंटर नहीं कर सकते जब तक आपके पास आईडी है. I won't go unless you come with me. मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आओगे मेरे साथ. Now conjunction if. If means अगर, is used to say that one thing can or will happen depending on another thing happening. Example, if you see him, give him this notebook. अगर आप उसको देखो तो give him this notebook, ये नोटबुक उसे दे देना. Call me if you need help. मुझे कॉल करना if अगर आपको मेरी ज़रूरत है. Now conjunction when. When means जब, means at that time. We are talking about किसी particular time, either it is in present, future or past. Example, she loved dancing when she was younger. मतलब वो उसे डांसिंग पसंद थी जब वो छोटी थी. I was sleeping when the phone rang. मैं सो रही थी जब फ़ोन बजा. Conjunction though, although means in spite of something. Means यानी कि यद्यपि या हालांकि, though और although same. Example, although he is quite rich, he is leading a simple life. हालांकि वो रिच है लेकिन फिर भी ही इज़ लीडिंग अ सिंपल लाइफ, फिर भी वो क्या कर रहा है, सिंपल लाइफ जी रहा है. दो इट वॉज कोल्ड वी स्टिल वेंट आउटसाइड. दो मतलब हालांकि कोल्ड है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं. वी स्टिल वेंट आउटसाइड, हम तब भी बाहर गए.